Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss energy depth relationship in an open channel flow. Firstly, we will see what is specific energy. Specific energy is the total energy at a section with respect to the channel bed as datum and is expressed as summation of flow depth and velocity head. When the channel slope is small, the specific energy is given by E equals to Y plus V square by 2G. Relationship between specific energy and depth of flow. When a depth of flow is plotted against the specific energy for a given channel section and discharge, a cubic parabola is formed. Okay, we can see from the graph specific energy versus depth of flow, a cubic parabola is formed. Okay, so here for a given specific energy, अगर specific energy कोई भी हमारे पास है, there are two depths. One is y1 and one is y2, and these two depths are known as alternate depths. For a given specific energy E, there are two possible depth y1 and y2. These are called alternate depth. मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी किसकी है, EC. ठीक, for a particular discharge Q corresponds to the critical state of flow. Hence, at the critical state of flow, the two alternate depths apparently becomes one, which is known as critical depth YC. E equals to y plus v square by 2g as v equals to q by a. Velocity is equals to discharge by area. यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे किसकी है, EC है. तो वहाँ पे जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ होगी. ठीक, वहाँ पे जो दोनों डेप्थ होगी y1 और y2 वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों इक्वल हो जाएंगी. ठीक, सो नेक्स्ट पॉइंट, E equals to y. We know that E equals to y plus v square by 2g, where v is q by a. So this will be equals to E equals to y plus q square by 2g a square. For E to be minimum at constant q. E minimum कब होगा, जब differentiation of E with respect to y is will be equals to 0. ठीक, constant क्या है, q है. ठीक, now dE by dy equals to 0. सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g डी बाई डी वाई ऑफ ए टू द पावर -2. ठीक, अब यहाँ पे हम सेक्शन देख लेंगे, डी ए है, ये डी वाई है, ये टॉप विड्थ है एंड ये डेप्थ है. ठीक, सो ए टू द पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 बाई ए क्यूब. कॉन्स्टेंट क्यू है हमारे पास 2 बाई क्यूब डी ए बाई डी वाई. ठीक, यहाँ पे हमको पता है डी ए क्या है, एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ दिस सेक्शन इज टी इंटू डी वाई. सो डी ए इज इक्वल्स टू टी डी वाई. सो डी ए बाई डी वाई इक्वल्स टू टी. सो डी ई बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g -2 बाई ए क्यूब डी ए बाई डी वाई विल इक्वल्स टू टी. सो वैल्यू हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी ई बाई डी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई टी जी ए क्यूब विच विल बी इक्वल्स टू 0 फॉर ई टू द मिनिमम. सो 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी जी ए क्यूब इक्वल्स टू 0. तो क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब इक्वल्स टू 1. लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू टी बाई जी ए. ठीक, हमको पता है क्यू बाई ए वी होता है, सो वी स्क्वायर टी बाई जी ए इक्वल्स टू 1. ठीक, नेक्स्ट, सो वी स्क्वायर टी बाई जी ए इक्वल्स टू 1. सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी ए बाई टी, वी इक्वल्स टू रूट GA by T. For rectangular channel section, area by top width is y. So V will be equals to root GY, or V by root GY equals to 1. Fraud number equals to V by root GY equals to 1. Thus, when the specific energy is minimum for a given discharge, the flow will be called critical flow and depth of flow will be called as critical depth, and velocity of flow is called as critical velocity VC.